going to start our the first lecture of cardiology, that is cardiovascular embryology and cardiovascular anatomy. Okay. First of all, welcome to SIMS Academy. I am Dr. Kamran and your lecturer here. And I hope you all are enjoyed the previous lectures. And I am very happy for your response. Okay, thank you so much. Now we are starting the first lecture in cardiology section, which is high yield organ system. Before starting the lecture, I want to clear a few concepts and few words which I will use. One word that is high yield. What is high yield? When I will use the word high yield, it's mean that is very important point. The point I want to clear, this is most likely asked questions in exam. Okay. So when I use the word high yield, so remember it's mean it is a very important type of like in FCPS in USMLE, it will be a very important. Okay. Uh, Going to the next, first of all, we will study the embryology sections. What is cardiac looping? In our development in the third week, third or fourth week, when the heart is developing, there is a looping of the heart. You can see in this picture, if I can, you can see in these pictures, starting from these 22 days, the development of heart is started. Okay. And the most important point in this development is that looping. What is looping? It is that the heart has a left to right looping like this. If this is a structure of heart, okay, just like this. Okay, when it is developing, it's having a loop like this. It is left to right, from this left side toward the right side. This is called looping. This is called normal polarity, normal looping. When heart is developing, the normal polarity and the normal looping is left to right. Okay. And it is second MCQs that came in the exam is what is the week that the heart develops in the week 4. Okay. So these are the two MCQs we have covered here. What is normal polarity of cardiac looping, cardiac development? The answer is left to right. Okay. In which week a functional heart in a vertebral embryo develops? That is week 4. Is that clear? So we have discussed the 2 points, what is polarity and what is the normal polarity, which is left to right. Is that clear? Okay. Next is very important MCQs that comes in USMLE Step 1. What is defect in this left to right polarity? The defect in left to right polarity when there is development of dextrocardia. Normally, our heart is present in the left side, but in dextrocardia, our heart will be present in the right side. Is that clear? That is called dextrocardia. And what is the reason of dextrocardia? Defect in dynin. Defect in dynin. What is dynin? We have already know the microtubules. We already know that there are some structures in our body that are maintaining the movements. That is cilia, axilia. So in establishment or development of the heart system, okay, cilia play a very important role because during this looping phase, a cilia contracts and slides. That creates a normal left to right polarity. But when there is a problem in the cilia, and the in cilia, the further I will say dynin. Okay, what is dynin? Actually a dynin is ATPase. It is ATPase that uses the ATP and causes the sliding function of cilia. It is abnormal, and that abnormality of the dynin leads to no sliding, no movements, no left to right polarity, and leads to derangements and the structures irregularity, and that lead to dextrocardia. That dextrocardia is one of the symptom, one of the sign in the primary ciliary dyskinesia. It is disease primary ciliary dyskinesia. It is called Cartagner syndrome. What is this? Cartagner syndrome. It usually presents in a just infant level, 2 year, 3 year, 5 year. It has a most likely symptom of chronic sinusitis, sinopulmonary infections. Okay,
And sometimes it presents other in the female present ovarian problem, fallopian tube. Okay, it also has some sensory neural hearing loss, but we will study detail in biochemistry. But you must know that the three MCQs in this section, I can repeat here. First MCQs, what is the week when the heart is starts developing? That is four week. Okay. The next MCQs, what is normal polarity left to right? If the defect in this normal polarity, in the defect in dynein, that lead to dextrocardia. Okay, thank you. So you can see in this picture, what are the structures when the development of the heart starts? In first of all, in above section, in the red section, you can see here, this is this is truncus arteriosus, and the below which is green is called bulbus cordis, and this is called, where you can see this is primitive ventricle, and the blue you can see this is sinus heart. Okay, so this is the structure which is developed when our all the heart system will develop from this section. Okay, so we will go to the next. You can see this which is truncus arteriosus. This creates the two part. You can say truncus arteriosus. Truncus arteriosus. First, what is trunk and art? Mean aorta and pulmonary trunk. We use the word pulmonary trunk and aorta. That is developed from this part. Okay. And the next, which is bulbus cordis. What will be developed from this bulbus cordis? Bulbus cordis will develop the ventricles. Okay. Ventricles. You can see here the green portion. You can see this is making the ventricle. And sorry, bulbous cordis is producing the atria, and this is primitive ventricle. Okay, this red is primitive ventricle. This primitive ventricle will make the ventricles, and the last, which is sinus horn, and the sinus horn will make the smooth portion of the atrium. Sinus horn will make smooth portion. Okay, and also the side below the sinus horn there are cardinal veins, which we will study in the next. What are these veins? Okay, now in summary of this is most important question that comes. The first part, which is red, is truncus arteriosus, which is developing into pulmonary trunk as well as the aorta. Okay, that is very important. First, this MCQ is most likely asked questions. Now we will study next, what are the septation of chambers? Okay, how our heart is developing, how right atrium, okay, left atrium, right ventricle, left ventricle, how it is developing, what is the role, what are the system, what are the steps. We will study that. Okay, if you can see this picture, I can make it more. Okay, first of all, what is septum primum? What is septum primum? Primum means first, septum means septa. First of all, when there is a developing of this right atrium, left atrium, right ventricle, and left ventricle, you can see in this picture. First of all, we will study interatrial septum. Okay, what is the development of septum between the right atrium and the left atrium? The first septum that is made between the left and the right atrium, that is called septum primum. Okay, it grows toward endocardial cushion. What is endocardial cushion? It is a structure that is between interatrial septum and interventricular septum here. That endocardial cushion is very important, and this is a very important MCQs we will study in the next slide, in the next section. What is the related? It is related to Down syndrome. Okay, so the endocardial cushion is the structure between interatrial septum and interventricular septum here. Okay, septum primum is the first septum creating between right and left atrium. Okay, and it is growing towards this endocardial cushion defect. Okay, next, what is foramen primum? You know that foramen is a hole. Okay, if you see in this diagram, this is septum primum, and this is endocardial cushion defect. This is endocardial cushion. Okay, so between this septum and this endocardial, there is a hole. This is a hole. This is called this is called foramen. Okay, okay. Now, what is the is why not there is a foramen primum? Why it is foramen secundum? Okay, because when there is a septum primum grows, okay, there is a septum, because it creates the growing initial steps of formation of
septum secundum. This step 3. You can see in this diagram, this is blue color. Green color is the septum primum. A blue color is the septum secundum. Okay. So the foramen secundum forms in the septum primum. Foramen primum regresses. Okay. It does not appear. It is very, very small. It's not appear. Okay. So when there is a development of this septum, there is a creation of the foramen hole, but it's not appear. Immediately starts appear the septum, which is blue color, which is second septum, that is septum secundum, and that grows more and more and more. You can see here, it is septum primum and blue, which is septum secundum. Now you can see in the diagram, I can zoom it more. You can see in the diagram that blue color is growing more and green color is degenerating because green was the primum, septum primum. Now septum primum is degenerating and septum secundum is growing. You can see the septum secundum from the upper side and septum secundum from this endocardial cushion side. They are going toward each other and making a hole between them. This is called foramen ovale. Okay, the reserve part or lower part of septum primum, which was primary septum, attached with this endocardial cushion defect, and the hole between the septum secundum, there is a foramen ovale. This is very important. Okay, what is foramen ovale? So what are the important MCQs? Okay, what are the important MCQs that will come in your exams? What is why I told you this very hectic concepts? Concept very important because it is related to interatrial septal defect. It is related to foramen ovale, patent foramen ovale defect. Okay, next question, point number 6, very important for exam point of view. High yield concept. Okay, when the septum primum closes against the septum secundum, which seal the foramen ovale soon after birth. Very important point here. You can see this is green color, which is septum primum. After the birth, this is left atria. Left atria, and you can see that after birth, when a child takes a breath, it decreases pressure in the pulmonary system. Okay, it decreases pressure. So what happens? This closes due to decreased pressure in the pulmonary system and increased pressure in the left atrium. Increased pressure in this left atrium closes this foramen ovale. This is very important. MCQs here. What is the MCQs here? What are the factors after birth that closes foramen ovale? What are the factors after birth that closes foramen ovale? And these are the increase left atrial pressure and decrease right atrial pressure. This is MCQs. Okay. Hadi. Hı? Era diye que me da vale. इंग्लिश है देखो उर्दू देखो बाजू उसका मुस्ताज द प्ले फास्ट ले हां अंते मार से हाँ सब कहती है फेस्टिवल हाँ मतलब गेम्स ज़्यादा कुछ नहीं है कि लगा द प्ले Hello. My voice is clear. Hello. Hello. ओके, पॉइंट 7 में और 6 में जो है ना, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज द पॉइंट 6? पॉइंट 6 इज दैट जब हमारे पास सेप्टम प्राइमम है और सेप्टम सेकंडम है. ओके, एंड सेप्टम प्राइमम क्लोजेस अगेंस्ट द सेप्टम सेकंडम. Septum primum closes against the septum secundum. You can see in this picture. This is a green. Cardiology, embryology. Okay. So we are discussing this septum primum and septum secundum. When septum primum closes, okay, against this septum secundum, this foramen ovale is also closed. Okay. When this foramen ovale is not closed,
It causes patent foramen ovale. Okay, patent foramen ovale. What are the factors? That was the most important MCQs. What are the factors that closes this? What are the factors after birth? Pulmonary resistance decreases and the left atrial pressure is increased. When left atrial pressure at this site is increased, this septum primum will close this foramen ovale. This is very important MCQs. So what are the factors that closes the foramen ovale? Increase left atrial pressure. Okay. A patent foramen ovale which is caused by the failure of septum primum and septum secundum to fuse after birth. Most are left untreated can lead to paradoxical emboli. How is that possible? I can tell you. Okay. First of all, you can say that a person who has a deep venous thrombosis, like he has a thrombi due to any disease, due to any cancer or peripheral vascular disease, there is a formation of thrombus in the femoral vein. You know that venous system is drained by inferior vena cava into the right side of the heart. When that thrombus will go into the right side, and that thrombus will go into the pulmonary system. But but when a patient who is presenting deep venous thrombosis and also presents with a stroke, you suspect there is paradoxical emboli. Paradoxical emboli mean the emboli that was present in venous system, now it is present in brain, which is in arterial system. Wow, how is that possible? Because venous system also only drain in the right side, which is the right atrium, right ventricle, and may go in pulmonary. But why in the arterial system? Due to this foramen ovale, due to interatrial septal defect. Now you can see in this picture, when the any emboli, any thrombus is coming into this right atrium, right ventricle, it will go into the left atrium and the left ventricle. And the left atrium, left ventricle emboli will go into these arch of aorta. And arch of aorta is giving blood supply to the brain, and brain has our vessels. So middle cerebral artery emboli will occur that lead to stroke. So this is very important like concept. When there is a venous thrombi going into arterial system, causing the transient ischemic stroke, causing the other strokes, that is due to paradoxical emboli. So you know the concept, what is paradoxical emboli. It occurs in foramen ovale and atrial septal defect. What are ventricles? How the ventricles are developed? Ventricles are developed via the very important two things. What are the muscular? First of all, we will discuss the interatrial septum. Between the ventricle, there is interatrial septum, and interatrial septum has two very important things. One is muscular part, and one is membranous part. The first of all, from the lower side, this portion, this is muscular interventricular septum, muscular. Okay, and which is associated endocardial cushion, that is membranous part. You can see here, I have already discussed that between interatrial septum and interventricular septum, there is endocardial cushion here. This is endocardial cushion place here. So first of all, membranous interventricular septum starts and grows and grows and grows, and toward endocardial cushion, it's membranous interventricular septum. So MCQs came, which of the following interventricular septal part has origin from endocardial cushion? So you can say membranous interventricular septum. Okay. So what is aorticopulmonary septum? So you can see we have already discussed कि interatrial septum बनता है. अब एक चीज होती है aorta और pulmonary trunk. उसको कैसे हमने डिफरेंशिएट करना है? उसके लिए एक टर्म यूज होती है aorticopulmonary septal spiraling. aorticopulmonary septal spiraling. उसका क्या होता है? वो उसका कंसेप्ट ये है कि आपका ये जो सेप्टम है, ये देखिए ये रोटेट करता है, ऐसे होता है, और फिर ये इस तरीके से हो जाता है कि जो राइट वेंट्रिकल है उसके सामने आ जाती है पल्मोनरी ट्रंक, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके ऊपर आ जाता है एओर्टा. दैट एआर्टिको पल्मोनरी जो सेप्टम होता है या स्पायरलिंग होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये ना हो तो फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स की डिजीज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी यहाँ पे आपको इतना पता हो कि मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ पे है, उसके बाद मस्कुलर कहाँ पे है, एआरटिको पल्मोनरी सेप्टम रोटेट्स होता है और उसका वो जाके मिलता है मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ एंड फॉर्म अ मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दैट क्लोज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया. इज दैट क्लियर?
उसके बाद व्हाट इज एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट? एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, व्हाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम। एमसीक्यूज आ सकता है कि कोई भी एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल का जो डिफेक्ट होगा, एट्रियो और वेंट्रिकुलर का कैनाल का डिफेक्ट, एट्रियो और वेंट्रिकुलर के सेप्टल का डिफेक्ट, वेल्वुलर प्रॉब्लम्स होंगे, ये सारे के सारे एंडोकार्डियल कुशन के साथ एसोसिएट होते हैं। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, if there is a problem of endocardial cushion defect, it lead to several cardiac structure abnormality। कौन से? एट्रियल सेप्टम में, वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, एनएवी वैल्व्स के अंदर आ सकती है, और सेमी ल्यूनर वैल्व्स के अंदर आ सकती है। एवी वैल्व में माइट्रल और ट्राइकस्पिड, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान है। सेमी ल्यूनर वैल्व्स में एओर्टिक एंड पल्मोनरी, जो कि हमारे पास पल्मोनरी और एओर्टा के साथ एसोसिएट, दीज आर सेमी ल्यूनर वैल्व। इज दैट क्लियर? तो अब हमारे पास, हमने यहाँ पे इस पेज के ऊपर अभी तक हमने 3 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। वन, कि मेम्ब्रेनस कैसे बनता है, मस्कुलर कैसे बनता है। ठीक है, मस्कुलर इज ऑटो ग्रोथ की वजह से बनता है। मेम्ब्रेनस कैसे बनता है? जब दोनों सेप्टम आपस में जुड़ जाती हैं तो दरमियान में मेम्ब्रेनस बन जाता है। और एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल। समझो कि एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट में सब कुछ होता है। इंटरएट्रियम सेप्टम डिफेक्ट हो सकता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट हो सकता है, एवरीथिंग। नेक्स्ट इज आउटफ्लो ट्रैक्ट कैसे बनता है? आउटफ्लो का मतलब होता है जब राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर बाहर ब्लड जाता है, उसको आउटफ्लो ट्रैक्ट कहते हैं। लाइक आउटफ्लो, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो आउटफ्लो होगा एओर्टा। अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो आउटफ्लो क्या होगा? पल्मोनरी ट्रंक। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? हमारे पास इसको क्या कहेंगे? ये किसके जेरे असर होता है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है। आउटफ्लो ट्रैक्ट फॉर्मेशन में हमारे पास जो न्यूरल क्रैश सेल्स माइग्रेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी हाई यील्ड एमसीक्यूज फॉर एफसीपीएस, एमडीएमएस, यूएसएमएलई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। न्यूरल क्रैश सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आउटफ्लो ट्रैक्ट फॉर्मेशन। ओके, इसमें क्या बनते हैं? एआरटी को पल्मोनरी सेप्टल स्पाइरलिंग के लिए बहुत जरूरी है। एआरटी को पल्मोनरी सेप्टम वगैरह की डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं, एंड दैट क्रिएट्स द असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। इज दैट क्लियर? वेल्व डेवलपमेंट क्या होती है? वेल्व डेवलपमेंट एंडोकार्डियल कुशन से होती है। ठीक है, जब ये हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्ट बन जाता है तो एंडोकार्डियल कुशन जो है वो वेल्व बना देता है। और इसमें से कुछ याद नहीं करना आपने, बस आपने ये याद रखना है, न्यूरल क्रैश सेल्स माइग्रेशन, न्यूरल क्रैश सेल्स माइग्रेशन, न्यूरल क्रैश सेल्स माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूएसएमएलई में कभी कभार वर्ड यूज होता है कोनोट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज, कोनोट्रंकल, तो अक्सर ये भी वर्ड यूज होता है। सो रिमेंबर दैट कोनोट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूड्स वो तमाम जो ट्रंकस से रिलेटेड है, जैसे कि हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है, एओर्टा है, या फिर ये जो एसोसिएटेड है ट्रंकस आर्टरियोसस। ये हमारी 3 डिजीजेज हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि कोनोट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज क्या होती हैं। उसमें भी किसका रोल है? न्यूरल क्रैश। ओके, ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स है, वो हमें क्या बनाते हैं? एम्ब्रियोनिक फेज में जो स्ट्रक्चर्स के नाम होते हैं अडल्ट में, वो क्या बनाते हैं? हमने डिस्कस किया सबसे पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ट्रंकस आर्टरियोसिस। अब हम पहली पिक्चर पे जाएं, सबसे पहले पहले आपको मैंने ऊपर ऊपर बताया था, ये देखिए इस रेड वाला, ये क्या बना रहा है? ट्रंकस, ट्रंकस आर्टरियोसिस असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। ओके, बल्बस कार्डिस क्या बनाता है? स्मूथ पार्ट्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। स्मूथ, देखो पार्ट दो होते हैं, एक होता है ट्रेबैकुलेटेड, एक होता है स्मूथ। अगर आप उसको कट सेक्शन करें, ग्रॉस, आप एनाटॉमी देखें तो एक स्मूथ पार्ट होता है और एक ग्रॉस पार्ट होता है। जो स्मूथ पार्ट होता है उसको बल्बस कार्डिस बनाता है, और जो ग्रॉस पार्ट होता है उसको कौन बनाता है? सॉरी, ट्रेबैकुलेटेड जो पार्ट होता है वो प्रीमिटिव वेंट्रिकल्स बनाते हैं। रिमेंबर दिस, प्रीमिटिव वेंट्रिकल्स एंड प्रीमिटिव एट्रियम, ये वर्ड याद रखना है। दे ऑलवेज मेक ट्रेबैकुलेटेड पार्ट। सबसे आसान करता हूँ इस पेज को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेप्ट याद रखें कि प्रीमिटिव वेंट्रिकल्स, प्रीमिटिव एट्रियम, प्रीमिटिव का वर्ड आया, दे विल मेक ट्रेबैकुलेटेड पार्ट, बात खत्म। प्रीमिटिव वेंट्रिकल आएगा तो ट्रेबैकुलेटेड वेंट्रिकल बनाएंगे, प्रीमिटिव एट्रियम आएगा तो ट्रेबैकुलेटेड पार्ट ऑफ एट्रिया बनाएंगे, बात खत्म। फिर हम आ जाती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे। सबसे पहले पहले मैंने आपको बताया था कि ऊपर ऊपर क्या होता है? ट्रंकस आर्टरियोसस, ट्रंकस आर्टरियोसस, नाम से याद रखना है। नाम में ट्रंक भी है और आर्टरियोसस भी है। ट्रंक पल्मोनरी ट्रंक से याद रखना है, आर्टरियोसस एओर्टा से। तो ये भी याद हो गया आपको।
हमारा ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आपने सोचना है कि प्रिमिटिव वेंट्रिकल से ट्यूबैकुलेटेड पार्ट तो बन गया, अब वेंट्रिकल्स का स्मूथ पार्ट कौन बनाएगा? तो आप रिमेंबर कर लो, वो बनाएगा बल्बस कार्डिस। फिर आपने याद रखना है कि प्रिमिटिव एट्रियम का तो हमने ट्यूबैकुलेटेड पार्ट बना दिया, अब स्मूथ पार्ट ऑफ एट्रियम का कौन बनाएगा? ये भी तो है, वो बनाएगा राइट हार्न ऑफ साइनस विनोसस, ये बनाएगा। वो कहाँ पे है? ऊपर आओ डायग्राम, ये देखिए, ये आपको साइनस हार्न नजर आ रहा है, ये आपको साइनस विनोसस नजर आ रहा है, इसी से साइनस विनोसस बनता है। इसके दो हार्न होते हैं, राइट और लेफ्ट, और जो साइनस विनोसस का राइट वाला हार्न होता है, दैट्स क्रिएट्स द स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। और फिर हम यहाँ भी कहानी खत्म नहीं हुई, फिर एटीएम का राइट वाला तो स्मूथ पता चल गया, तो लेफ्ट वाला कौन बनाएगा? ये भी तो कहानी है, जो कि एमसीक्यूज है, हाई गेल्ड पॉइंट, एफसीपीएस, एमडीएमएस, यूएसएमएलई में ये पूछा जाता है कि लेफ्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम का स्मूथ पार्ट कौन बनाता है? लेफ्ट एट्रियम का स्मूथ पार्ट कौन बनाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मूथ पार्ट लेफ्ट एट्रियम को बनाता है पल्मोनरी वेन। ये अक्सर सवाल गलत करती हैं एमडीएमएस में, एफसीपीएस में, यूएसएमएलई में, यूएसएमएलई के स्टूडेंट्स में तो यूवर्ड करती हैं, तो उसमें ये आपको आइडिया हो जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम का स्मूथ पार्ट जो बनता है वो पल्मोनरी वेन से बनता है, रिमेंबर इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, तो यहाँ तक हम, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एंडोकार्डियल क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया एंडोकार्डियल क्वेश्चन सब कुछ बनाता है, एट्रियल सेप्टम, मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी एंड सेमिलुनर वेल्व। अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मेक्स द वेल्व, तो आपने एंडोकार्डियल क्वेश्चन ही लगाना, वही वेल्व बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पूछे कि अच्छा आपने मुझे सारा हार्ट, राइट एट्रियम बता दिया, लेफ्ट बता दिया, राइट वेंट्रिकल बता दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल बता दिया, जब इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा कौन बनाएगा? ये भी तो है कोई कहानी, उन्होंने तो ब्लड लेके आना है। तो इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा कौन बनाएगा? कार्डिनल वेन, जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था आपको। ये 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 जो कार्डिनल वेन्स है ना, ये हमारा विनस सिस्टम बनाती हैं, जो विनस सिस्टम लेके। ओके, राइट कॉमन कार्डिनल और राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन जो है वो सुपीरियर वेना केवा बनाती हैं, और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो है वो इंफीरियर वेना केवा बनाती है। ठीक है, शायद वो इधर नहीं लिखा हुआ, आप बेशक नोट कर लें। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन इज मेकिंग इंफीरियर वेना केवा। ओके, यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। ओके, फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले हमें आपने ये बताना है कि हमारे पास जो अम्बलाइकल वेन है और अम्बलाइकल आर्टरी है, इसकी कंफ्यूजन को दूर करें। अम्बलाइकल जो अक्सर हमने सुना है कि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट इन फीटल सर्कुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर दैट अम्बलाइकल वेन हैज द वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या होना चाहिए कि अम्बलाइकल आर्टरी इज द हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे उलट सिस्टम है, हमारी नॉर्मल आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड है, ओके, और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड, बट अम्बलाइकल में उलट है। अम्बलाइकल वेन हैज वेल ऑक्सीजनेटेड एंड अम्बलाइकल आर्टरी इज लेस ऑक्सीजनेटेड। ओके, तो अ, आप सब में से एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं 5 मिनट की? Okay, so we discuss that there are the two most important things. One is that umbilical vein has well oxygenated, and the artery, the artery is having a deoxygen or less oxygen. Okay, this is the difference between the adult and the fetal circulation. Okay, now what are the important point in fetal circulation? The important point in fetal circulation is what is ductus venosus. What is ductus venosus? That is most one point we should know that. First of all, you can see that this is placenta. Umbilical vein is carrying the oxygenated blood toward the fetus. Okay, and this umbilical vein is connected with inferior vena cava, which is future inferior vena cava. Okay, that is, you can say here, you can see here, this is inferior vena cava. Okay, and the blood coming from placenta is shunted toward inferior vena cava, bypassing this liver, bypassing this liver, bypassing a hepatic circulation. Okay, so via a structure that is called ductus venosus, blood entering from umbilical vein to inferior vena cava, bypassing the liver.
That structure which carry this blood toward inferior vena cava is called ductus venosus. Okay. Next important point is that very high yield concept. One and a foremost concept in this section that is very important is inferior vena cava that carry the blood which is well oxygenated through this ductus venosus only goes from right atrium into the left atrium. Very important point to remember. The blood that is well oxygenated coming from ductus venosus will only go from this right atrium toward this left atrium. It will not go into normal routine, which is right atrium to the right ventricle. No. Well oxygenated blood will go from right atrium through this foramen ovale into the left atrium. अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ से ये ना जाए तो ब्रेन तो हाइपॉक्सिया हो जाए ब्रेन का। इसलिए बच्चों में आपने देखा होगा कि ये ऊपर जो आर्च ऑफ एओर्टा है यहाँ से ब्रेन की सप्लाई जाती है, कैरोटिड जाती हैं। तो ये सारे के सारे आपको क्यों रेड नजर आ रही हैं? दे आर वेरी वेल ऑक्सीजनेटेड बिकॉज क्योंकि हमारे पास डक्टस विनोसस से वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और फिर वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ एओर्टा में आता है एंड आर्च ऑफ एओर्टा से ब्रेन में जाता है। दैट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाई यील्ड पॉइंट। जो ऊपर से सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल डायरेक्ट जाता है और फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। अब यहाँ पे सवाल है कि पल्मोनरी तो डेवलपमेंट है ही नहीं बच्चे में, फीटस में, तो फिर क्या होगा? जो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा, फिर पल्मोनरी सिस्टम में जाएगा। जब पल्मोनरी सिस्टम में आगे कुछ है ही नहीं तो फिर कहाँ जाएगा? फिर वो ब्लड जाएगा डिसेंडिंग एओर्टा में थ्रू अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस। सो सुपीरियर वेना केवा का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक टू डिसेंडिंग एओर्टा जाता है किस स्ट्रक्चर के जरिए? डक्टस आर्टेरियोसस के जरिए। अच्छा जी, डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। कब क्लोज होगी, कैसे क्लोज होगी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड, पहला मैंने कंसेप्ट बता दिया कि डीऑक्सीजनेटेड है और ऑक्सीजनेटेड है वेनस का अम्बलाइकल वेन। दूसरा कंसेप्ट बताया कि जो कि प्लेसेंटा से अम्बलाइकल वेन के जरिए जो ब्लड जाएगा डक्टस वेनोसस के जरिए वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम जाएगा, वो राइट इधर नीचे नहीं आएगा। दैट्स व्हाई कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड होती है। तीसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जो डीऑक्सीजनेटेड ऊपर से आएगा सुपीरियर वेना केवा से, वीनस सप्लाई ब्रेन से आएगी, वो कहाँ जाएगी? राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक टू द डिसेंडिंग एओर्टा। किसके जरिए जाएगी? डक्टस आर्टेरियोसस के। फिर उसके बाद नीचे आती है वापस। यहाँ पे पढ़ते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। डिसेंडिंग एओर्टा ये जो है ये शंट जो बनी है डायरेक्ट, क्योंकि पल्मोनरी को नहीं जाने देता ब्लड, सारा का सारा डिसेंडिंग एओर्टा में आ जाता है। क्यों आता है? एमसीक्यूज है। बिकॉज ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस। बच्चों में, फीटल में पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस होती है, दैट्स व्हाई ये डक्टस आर्टरियोसस बनी रहती है। अब मैं इसका उलट करता हूँ। बच्चा पैदा हो गया है, पहला दिन है, दूसरा दिन है, सांस लेता है, सांस लेता है, क्या होता है? उसके लंग फूलती हैं। जब लंग फूलती हैं उसकी क्या होती है? रेजिस्टेंस कम होती है, ऑक्सीजनेशन स्टार्ट होती है, ऑक्सीजनेशन स्टार्ट होती है। जब ऑक्सीजनेशन स्टार्ट होगी क्या होगी? रेजिस्टेंस कम होगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? व्हाट विल हैपन? ऑक्सीजन की जो टेंशन होगी वो बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की टेंशन बढ़ेगी पल्मोनरी वेस्कुलर की रेजिस्टेंस कम होगी एंड देयर विल बी मोर फ्लो टू द लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर बढ़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था जब लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर बढ़ेगा तो जो सेप्टम, प्राइमम सेप्टम सेकंडम के ऊपर चढ़ के उस फोरामेन ओवेल को क्लोज कर देता है। आपको ये बात मैंने समझाई थी। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या रोल है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस जो है उसको क्लोज करने में बड़ा अहम रोल है। किसका रोल है जी? इसके इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या रोल है? वो क्या मतलब है उसका? तो ये है कि हमारे जब प्लेसेंटल की सेपरेशन होती है बर्थ के बाद तो आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिक्रीज हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन के डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है? डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर एक ड्रग है विच इज एंडोमेथासिन, एंडोमेथासिन हेल्प्स क्लोज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, वो कैसे होता है देखिए। अब एंडोमेथासिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन का इनहिबिटर है।
वो क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करेगा, और जो ऑलरेडी ओपन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का मतलब है ओपन डक्टस आर्टरियोसिस, जो नॉर्मली बर्थ के बाद ओपन रह गई है, बर्थ के बाद ये ओपन रह गई है, इसको क्लोज करना है। हमने क्या करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करना है, कम रखना है। उसके लिए हम ड्रग देंगे एंडोमेथासिन, ठीक है। अच्छा, अडल्ट स्ट्रक्चर क्या है इस डक्टस आर्टरियोसिस का, डक्टस आर्टरियोसिस अडल्ट स्ट्रक्चर इसका है लिगामेंटम आर्टरियोसम, लिगामेंटम आर्टरियोसम। द मोस्ट हाई यील्ड कंसेप्ट ऑफ दिस पेज इज थ्री, तीन चीजें। नंबर वन, अम्बिलिकल वेन में वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नंबर दो, नंबर दो, जो वेल ऑक्सीजनेटेड अम्बिलिकल वेन से ब्लड हेपेटिक सर्कुलेशन को बाईपास करके जो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू राइट एट्रियम को जाता है, वो नीचे नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। दो कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट। तीसरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पल्मोनरी रेजिस्टेंस की वजह से नहीं जाएगा लंग्स में, और वो कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग एओर्टा में, और डिसेंडिंग एओर्टा में किस शंट के थ्रू जाएगा, डक्टस आर्टरियोसिस को। और फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डक्टस आर्टरियोसिस को कौन ओपन रखता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। कब बंद होंगी, जब बर्थ के बाद प्लेसेंटा डिटैच करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन का फ्लो कम होगा, डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाएगा। तो 5 point which is very high yield is prostaglandins keeps PDA open. Prostaglandin patent ductus arteriosus, ये रिमेंबर ये ओपन रखती है। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव्स डिस्कस करते हैं जी। डक्टस आर्टरियोसस का जो अडल्ट डेरिवेटिव है वो क्या होता है, द अडल्ट डेरिवेटिव ऑफ डक्टस आर्ट अभी हमने डिस्कस किया है, लिगामेंटम आर्टरियोसम। इसका एक कंसेप्ट है, इसके नियरली एक नर्व होती है, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, जो इसी के साथ ही होती है। उसका एसोसिएशन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसके अंदर ये नर्व की इंजरी हो तो क्या होता है। डक्टस विनोसस क्या बनाएगा, लिगामेंटम विनोसम। ओके, इज दैट क्लियर। डक्टस विनोसस लिगामेंटम विनोसम बनाएगा। फोरामेन ओवेल क्या बनाएगा, फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस। इज दैट क्लियर। अच्छा, उसके बाद सॉरी, अम्बिलिकल आर्टरीज क्या बनाएगी, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। अब देखिए यहाँ पे इट इज अ कंसेप्ट हियर दैट मीडियल आर्टरीज एंड median and medial, these are two concepts, median. A lentuous structure urachus makes median umbilical ligament, umbilical arteries made medial umbilical ligament. So it is, remember, umbilical has al at the end, so remember medial umbilical ligament structure. Okay, umbilical vein makes ligamentum teres hepatis, which is round ligament of liver. You can see there, this is ligamentum teres hepatis. It is a round ligament which is made by umbilical vein. It is not important at this point. Okay, so now we have all the structure. Now we will discuss only 2 points here, and thus we will going to the next section, which is question and answer section. Okay, and we will cover coronary blood supply in the next lecture. We will cover only pericardium and what is anatomy of the heart. Okay, is that clear? I think in updated variant of 2023, there are some other topic which we will study also, that is aortic arch derivatives. We have aortic arches. Okay, we will study in the reproductive section. Okay, what are the arches? Okay, there are different arches. This is the structure when we developing of reproductive system in our body. There are some endoderm, mesoderm, ectoderm. Okay, some structures are made from endoderm, some mesoderm, and some ectoderm. So in our head and neck system, like bilious, ankles, stapes, air bones, head, our muscles of the neck, our swallowing muscles, the head and neck. During the development of head and neck, there are a system of arches. Okay, these arches having a different endodermal portion is called pouch, mesodermal portion, and ectodermal. We will study in detail in the reproductive section, but you must know that it is just a rata. Like you can remember this: what is first, second, third, fourth, and fifth. Okay, first part of maxillary artery. Okay, it gives supply of the first aortic arch. Second is stapedial artery and hyoid artery. Actually, we will study more detail in reproductive section, but I will tell you the detail section, what are arches, what are the structures which are developing. Just remember, it is actually it is given in the first book, so we are revising.
but in more detail, we will study in reproductive section. Okay, the first is maxillary artery, and the second is the stapedial and hyoid. Third artery is common carotid artery, and which is internal carotid artery also, but only the proximal part. Fourth is on left side there is arch which is aortic arch, and the right is proximal part of the right subclavian artery. And sixth part which is the proximal part of pulmonary artery. Okay, it's we will discuss more detail in our section of reproduction. Okay, don't worry about that. Next, what is anatomy of the heart? You should know for USMLE steps. You should know this structure. What are CT scan? What are X-ray? FCPS and MDMS. It is least likely to come in FCPS and MDMS because it, these type of pictures questions are not coming. Okay. Oh, so you should know for a basic knowledge what in X-ray what we can see. In X-ray we can see this structure which is superior vena cava. Here is azygous vein, and most anterior is the what is right ventricle. Above this right ventricle, this is right atrium. Okay, this is inferior vena cava, and this is aortic knob, and this is pulmonary artery. This is descending aorta. Okay, the question here for USMLE students is that this will give you this structure, and they will mention this point. Okay, here. Okay, what is this structure? So you must know that it is right ventricle, which is most anterior part of the heart. MCQs, very important MCQs. Most posterior part of the heart is left atrium. Association of left atrium is with esophagus. Remember it. Very important point. I am discussing here. Most anterior part is the right ventricle. In blunt trauma, most part that is injured in the heart is right ventricle. Okay. And most posterior part associated with esophagus is the left atrium. Very important MC. Okay. And the next association is the left recurrent laryngeal nerve. If there is a mitral stenosis, in mitral stenosis, there is a stenosed mitral valve. What happens? Left atrium is enlarged because the blood is not pumping from left atrium to the left ventricle. What will happen? Left ventricle will not be accommodating the blood because due to stenosis between left atrium and the left ventricle. What will happen? Left atrium will be enlarged. It so much enlarged that it will compress. It will compress esophagus. You can see this is left atrium. Here, this is left atrium. And posterior to the left atrium, what is structure? Posterior. Posterior to left atrium is esophagus. So this will compress the esophagus. And you know that at the level of the left atrium below that, there is a nerve which is left recurrent laryngeal nerve. This is a very super important high yield question for USMLE steps, for MDMS student, for FCPS student, for NLE students. This question is all-rounder questions for all exams. Okay. What is the most anterior? What is the most posterior? Which nerve is injured? When there is a mitral stenosis, enlargement of left atrium causes what? That is very important. Is that clear? So now we will discuss this pericardium and the coronary blood flow. We will discuss in the later lecture. Today we have only discussed this. Now we will going to the session, which is a question and answer session. Okay, are you ready here for the questions and answer session? I should text in the group that questions are being discussed. Okay. Okay. Now we will going to the question session. So now question from the cardiology section, and the topic is heart embryology and anatomy. And our first question is the 3-year-old boy has difficulty breathing and had a productive cough. He has a recurrent episodes of sinusitis and otitis media. Respiratory infections only respond to high-dose antibiotic therapy. There are tackles and a wheezing on pulmonary auscultation. Cardiovascular examination shows a cardiac point of maximal impulse that is palpated at right fifth intercostal space. What is diagnosis and what is dysfunctional in this patient? So we are discussing cardiology section, and from the cardiology section, Mr. Zishan Ali, please don't mark anything here. Okay. Remove your
Okay, thank you so much. Okay, I am reading your response. Okay, thank you so much. Okay, Miss Zoya has just responded first, and Mr. Abrar, thank you, Dr. Abrar. Thank you, Dr. Arifa Haider. Thank you. Is Scott-Tegner syndrome. So next, what is dysfunctional in this patient? What is dysfunctional in this patient? Okay, thank you. Excellent, excellent. So this is actually a question of Scott-Tegner syndrome, which is primary ciliary dyskinesia. Okay, the one of the most important sign and symptom is a recurrent episodes of sinusitis and otitis media. Okay, and the respiratory infections only responded to high dose antibiotics therapy because these are recurrent and not only controls with a low dose. There are crackles and wheezing because of pulmonary pneumonia, like it is a pneumonia-like condition, so it's having a crackles, wheezing, and asthmatic condition also has a wheezing. So it creates crackles and wheezing. And the very important point I want to highlight here is that that was the point where you can, no one here, no one here told me this point, dextrocardia. You, this is a cardiac point of maximal impulse that is palpated at right fifth intercostal space. Normally, we palpate in left intercostal space, not in the right. So I know many of the brilliant students just noted this point, but many of the people ignore it. Okay, so maximal impulse is actually maximal impulse cardiac is this apex. It is apex. Okay, when there is a apex that is normally in the left fifth intercostal space, but in this scenario it is in the right, so it is dextrocardia. So only creation that having dextrocardia is Scott-Tegner syndrome. Thank you for your answer. Thank you so much. Okay. Next question is a 34-year-old woman is brought to the emergency department after developing a sudden onset right arm weakness and difficulty speaking. She has no significant medical history but takes oral contraceptives. Examination shows the decreased right upper extremity strength and expressive aphasia. Cardiac auscultation is normal. MRI of the brain revealed acute infarction in the left frontal lobe. Okay. Further evaluation to determine an etiology is performed, and during an echocardiogram, agitated normal saline injected into a peripheral vein, and bubbles are seen passing into left side of the heart. Which of the following is most likely cause of observed finding in this patient? So I highlight the most important point: sudden onset, weakness, difficulty speaking, and MRI shows infarction. But when we do echocardiography and we injected a saline, very important points to I am highlighting. Bubbles are seen passing into left side of heart. So can you please tell me what is this? Okay, Dr. Evan, you are you are telling me the paradoxical MNI, but tell me the reason. Unmute yourself, whatever, any volunteer who can unmute and just tell me. Okay, DVT caused paradoxical due to patent foramen leading to stroke. Okay, Dr. Zoya. Thank you, Dr. Javed. Oh, yes. I wanted to hear this answer from Dr. Javed, but you are asking me, not telling me. Yes, PDA and ASD can present later in life, not PD. ASD can present later in life. Yes, of course. Okay. Okay. So all the people you know about this. So this is called paradoxical emboli. Okay. Paradoxical emboli are the already I discussed here. There is a venous system, but they will go into the arterial system. Is that clear? Is that clear? Okay. Question number 3. Which are the factors that help to close the foramen ovale after birth? Which are the factors that
help to close the foramen ovale after birth? Okay, Dr. 83, thank you. Dr. Zoya, thank you for your answer. Okay, Dr. Avan, thank you. Dr. Badia, thank you. Dr. Khalid, thank you. Thank you. All are right. Okay, thank you. Oh, I want to highlight here that prostaglandin, Dr. Zoya, prostaglandin associated with ductus arteriosus. Okay, oxygen and prostaglandin is associated with ductus arteriosus, but pressure in the left atrium is associated with foramen ovale. Of course, it is associated with, but less likely. But we will discuss if there is a left atrial pressure that is increased and decrease right atrial pressure and decrease pulmonary resistance that is foramen ovale factor. Question number 4. A 5-week-old boy evaluated for a long week history of rapid breathing and tiring. Infant was born at home after uneventful pregnancy. Okay. उसके बाद he declined all the testing and ultrasound evaluations. His temperature is this and this. Patient cardiovascular examination is notable for. What is cardiovascular examination? Hyperdynamic precardium, mid-diastolic rumble at sternal border, 3 by 6 hollow systolic murmur. It is a grading of the murmur. Murmur which is hollow systolic will study what are the systolic, what are diastolic, what are hollow systolic. Hollow systolic murmur in the apex that radiates to the left axilla. Echocardiogram shows defects in lower part of interatrial septum and interventricular septum. So what is the diagnosis and what is the associated condition? This is a slight different, difficult question. Okay, let's read the answers. Okay, Zoya, TOF, endocardial cushion defect, TOF, ASD, endocardial cushion defect, ASD, VSD, VSD causing left to right shunt. No, so that's why I have posted in a group. Somebody maybe tell me the right answer. But some person are trying to tell me it's actually not only the VSD, Dr. Avan. It's not only VSD. It's include VSD. It is a that defects. Some person who is telling me endocardial cushion defect. Yes, that is right. Okay, leading to ASD and VSD. And I will add a one further that is valve problem also. Okay, Dr. VN. Okay, endocardial cushion defect that is leading to valve problem, ASD problem, VSD. It is actually aorticopulmonary canal defect. It is aorticopulmonary canal defect. It is all defect, right? Endocardial cushion, primary problem is the endocardium, leading to aorticopulmonary septum as well as ventricular septal defect. Okay. So the name of this problem is aorticopulmonary septal defect due to in the what is the diagnosis of this is Down syndrome. It is a patient of Down syndrome. Okay. So thank you so much for answering Dr. V. And I don't know the VN, but it's VN. Your answer was right. Thank you. Question number 5. A 52-year-old man brought to emergency department with evaluation of fever and malaise. Cardiopulmonary examination is showing a new hollow systolic murmur that radiates toward axilla. Blood culture obtained and patient undergoes the transesophageal echocardiography. And the ultrasound probe is placed in mid-esophagus facing anteriorly. Probe is facing anteriorly. Which of the cardiac chambers are interrogated? So which cardiac structure will be close to the probe? It is anatomy. Very important question.
It is just a technical way to tell you. Okay, actually we are going into the esophagus and just checking anterior to the esophagus which structure of the heart we are checking. Okay, so one by one, Mr. V, and thank you. Your right answer, Mr. Waleed, right answer, left atrium. Dr. Javed, sorry, it's left atrium. Okay, left atrium. 83, it's left atrium. I told you uh, esophagus relation with the left atrium. Mitral stenosis, left in atrial enlargement, compression of esophagus, compression of nerve, dysphonia, dysphagia. This is called Altner syndrome. ORTNER, Altner syndrome. Mitral stenosis, there is an increased left atrial enlargement that compress esophagus, that compress the left recurrent laryngeal nerve. This is Altner syndrome. ORTNER, Altner syndrome. Okay, thank you. It is left atrium. Question number 6. Which is the most anterior structure of heart? It is so simple. I have just already told you. It's so simple. It's so simple. Yes, it's right ventricle. It's right ventricle. Most anterior structure, very important MCQs. Very, very, very important. FCPS, MTMS, NLE, USMLE. But in USMLE, it's not so simple. It will give you a picture to highlight you. Okay, but in MDMS, it will give you a simple like this. Okay, this like this. They will give you like this. Which are the most injured structure of heart in blunt trauma? Okay, it's right ventricle. Thank you. It was a good response. I think all of the people you were very, very, very happy. You have showed me the 85%, 88% response, excluding this question 4, which was a slight difficult, but it was a 90, almost 90% response. You have told me the all the questions, answers, and all this is actually a very difficult questions. Very difficult. The only USMLE student who already studied can answer this. But you already have good knowledge. It means that we have delivered a good lecture to you. You are answering all of these questions. Okay, so our session is ending here. If any question you want to ask, please unmute yourself. If anything you want to ask from me directly, please unmute करें और मुझसे पूछ सकते हैं. Okay, thank you for all your cooperation. Okay, so any question, please, you can ask.